Hello students, welcome to my channel Learn with Usman. Today I am going to teach you about four types of sentences. In English grammar we have four types of sentences. Especially in English writing you need to know about four types of sentences. It is important to know about the different types of sentences because if you are using one type of sentence in your writing style, it gives a bad look or it gives a bad impression on your writing. So we have simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound complex sentence. So first we start with simple sentence. A simple sentence is defined as a sentence which has only one subject and one predicate, or we can say that a sentence which has only one independent clause is called simple sentence. We have an example of a simple sentence is he plays cricket. In this example you see we have one subject and one predicate. कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, उसके थ्रू आपको अच्छे से समझ आएगी. She goes, I go, Ali is sleeping, you see in these examples we have this one is one independent clause. Okay, I go, one independent clause. Ali is sleeping, Ali is sleeping. We have subject, helping verb or main verb, or we can say that it is a clause, independent clause. ठीक है, तो होपफुली आपको सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशंस, उसकी एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी. After simple sentence we have compound sentence. Compound sentence. A compound sentence is defined as a sentence which has two or more independent clause joined by a conjunction and, but, so or. Two or more independent clause, or we can say that compound sentence is a combination of two simple sentences. We have an example about compound sentence. I called him but he gave me no answer. In this example you see that I called him but he gave me no answer. In this example I called him is one independent clause but joined by a conjunction, but he gave me no answer is another independent clause. After this we have second example. She must weep, she must weep or she will die. She must weep is one independent clause or joined by a conjunction or. जैसे कि हमने डेफिनेशन के अंदर बात की कि ये कम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का. ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस. तो यहाँ पर वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शी मस्ट वीप और दिस वन जॉइंड बाय अ कंजंक्शन और शी विल डाई इज अनदर इंडिपेंडेंट क्लॉज. थर्ड एग्जाम्पल, नाइट केम ऑन. दिस वन इज one independent clause, night came on and joined by a conjunction and, rain fell heavily, second independent clause in this example, and joined by conjunction and, we all got
very wet. This one is third independent clause in this example. So जैसा कि हमने डेफिनेशन के अंदर बात की टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो इस एग्जांपल के अंदर आपने देख लिया कि यहाँ पर 3 इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज हुए हैं एक कंपाउंड सेंटेंस के अंदर. होपफुली आपको कंपाउंड सेंटेंस की भी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी. आफ्टर कंपाउंड सेंटेंस वी हैव थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज complex sentence. A complex sentence consists of one independent clause and one or more dependent clause. Yes, जो complex sentence है उसके अंदर आपको एक independent clause और एक या एक से ज़्यादा dependent clause मिलेंगे. We have some examples. First we have I missed my exam because I was late. Here I missed my exam is a independent clause in this sentence. Independent. Okay? Because one more thing, in complex sentences we have to subordinate conjunctions like because, if, when, after, etc. etc. Oh, okay. I was late. The second part of the sentence joined by a subordinate conjunction because this one is subordinate conjunction. I was late is dependent clause in this example. Dependent clause. ठीक है? The second example we have everything comes if a man will only work and wait. Everything comes is a independent clause in this example. Independent clause. Okay, if is a subordinate conjunction, this one is subordinate conjunction. Okay, a man will only work and wait. A man will only work and wait is dependent one, dependent clause in this example. Okay, dependent clause. The third example we have my heart leaps up when I behold a rainbow in the sky. My heart leaps up is a independent clause in this example. When is subordinate conjunction in this example. I behold rainbow in the sky is dependent clause in this example. So hopefully through these examples, one more example. The fourth one is I cooked hurriedly after his arrival. I cook hurriedly is a independent clause in this example. After is a, यहाँ पर ये example लिखने का मकसद यही था कि जो आपको बता दूं कि after भी आपका subordinate conjunctions के अंदर आता है. ठीक है, his arrival is dependent clause. ठीक है, so hopefully through these examples आपको complex sentence की अच्छे से समझ आ चुकी होगी. After third type complex sentence we have the last one is compound complex sentence. A compound complex sentence consists of two or more independent clause and at least one dependent clause. ठीक है,
or we can say that it is a combination of compound and complex sentence. ठीक है, this type of sentence, compound complex sentence, is a bit difficult, but this type of sentence gives writers many ways to create sentences. Yes, ये जो वे है, ये जो लास्ट टाइप है कंपाउंड कम्प्लेक्स, ये राइटर्स को और लिखने वाले को बहुत से वेज देती है. एक सेंटेंस को आप डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं. कैसे? थ्रू एग्जांपल्स के आपको समझाता हूँ. यहाँ पर देखें, मैंने एक एग्जांपल को 2 वेज के अंदर लिखा, 2 वेज के अंदर लिखा हुआ है. फर्स्ट को पहले देखते हैं. 3 पार्ट्स के अंदर मैंने डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि वी हैव 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज or at least one dependent clause. So 1 dependent clause and 2 independent clause. ठीक है, we have 2 independent clause in this example. When my boss yelled at me, ठीक है, this one is dependent clause. This part is a dependent clause. ठीक है, I got angry, so I quit. ये सेंटेंस एक ही है, बट इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है आपको समझाने के लिए कि हमारे पास यहाँ पर ये डिपेंडेंट क्लॉज है, आई गॉट एंग्री सो आई क्विट. ये दोनों हमारे पास इंडिपेंडेंट पार्ट हैं. ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं. एक ही एग्जाम्पल होगी. अब इसी एग्जाम्पल को मैंने एक और वे के अंदर लिखा बिकॉज इट गिव्स अ मैनी वेज टू क्रिएट सेंटेंसेस. ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर माई बॉस येल्ड एट मी. My boss yelled at me, so I quit because I was hurt. ठीक है, यहाँ पर देखें, अब वही सेंटेंस है, उसको मैंने ड्राइव किया है एक डिफरेंट वे के अंदर. ठीक है, सो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर हमारे पास ये चॉइस होती है, हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं कि हम एक सेंटेंस को डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट वेज के अंदर हम उसे ड्राइव कर सकते हैं. ठीक है, सब्सक्राइब टू माई चैनल, watch, like and share my videos. Thank you.